Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with 10th class biology, and in this class today my chapter is about control and coordination in animals. It included in the unit second syllabus, and in this chapter today my topic to discuss is ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो ऑफलाइन क्लासेस थे क्लासेस में तो हमने पढ़े कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, तो वो कंक्लूड हो गए। तो आज हम इस टॉपिक पे जाएंगे, ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट जो होते हैं दिस इस पे हम आज डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक मोमेंट्स, और इसको या कहते हैं ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्मस। ट्रॉपिक मोमेंट्स को हो या ट्रॉपिज्मस को हो प्लांट्स में, दीज आर ग्रोथ मोमेंट्स, these are growth moments which are seen in plants. As the plant shows movement, you know all the living plants or living organisms, they provide response to different stimulus in their surrounding. That means in this also in this moment there is the growth, there is a growth take place in the different parts of the plants, stem, root, shoot, हम कहेंगे शूट एपेक्स, मतलब ब्रांच एपेक्स में इनमें ग्रोथ होती है। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज द ग्रोथ मोमेंट्स, एंड आल्सो this movement is in a particular direction in plants. This movement takes place in a particular direction, therefore it is sometimes also known as directional moments, डायरेक्शनल मोमेंट्स भी कहा जाता है इसको, डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स, डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स, दिस इज आल्सो नोन एज द डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रॉपिक मोमेंट्स क्या होते हैं, ट्रॉपिज्म्स, ट्रॉपिज्म्स भी कहलाते हैं इसको, एंड obviously there is a growth actually take place in plant body. Then the trophic momentous, in this the plants provide shows the movement toward the different stimuli. That what are those stimuli? Stimuli are the different conditions which the plants get in it is in their surrounding. That those different stimuli are we can say the light plants are giving respond to the light. Yeah, as we see, as we notice, the plant shoot जो होता है, they give the response towards the light, and there is also the response towards the water, presence of water in the surrounding plants. Also this is a second stimulus, and third is the we can say chemicals, presence of chemicals, as we can say that chemicals, nutrients, fertilizers in the soil, also they respond to the air. And there is a root movement, the root part movement इसमें दिखाई देता है। तो also you can say that this type of movement in the pollen, then when the pollen form the pollen tubes on the surface of the carpel in a flower, that there is a touch, touch. These are the certain stimuli, the plants respond to these, and these various stimuli are, if we plant respond to the light, presence of light, it is known as the phototrophism. When the plant provide the respond to the water, it is known as the hydrotrophism. When the plant provide the response to the chemicals, it is known as the chemotrophism. When the plants give the response to the touch, it is known as the thigmotrophism. That means these trophic moments are of various types: phototrophism and hydrotrophism, chemotrophism, thigmotrophism. Various these trophic moments, trophism, or the to be noted that these are the growth moments, as the plant show the moment with the as the plant respond, अगर प्लांट रिस्पॉन्ड करता है
टू द डिफरेंट स्टिमुलस, जैसे कि ये, और इनके साथ साथ प्लांट्स के उस पार्ट में ग्रोथ भी होती है, then there is a growth take place in plant, therefore it is known as the growth momentous. And when there is a growth, the growth is in a particular direction, एक सीधी एक मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, चाहे सिटम पार्ट में चाहे रूट पार्ट में, therefore it is also known sometimes as directional ग्रोथ मोमेंट्स। तो यहाँ पे टाइफस की बात हम कर लेंगे एज द वेरियस स्टिमुलाई आर कंसर्न्ड, द वेरियस कंडीशंस द प्लांट्स फेस इन देयर सराउंडिंग, then different moments are seen in the plant body. This is an important question in point of examination, that if plants are giving their response towards the light, it is known as the phototrophism. याद रखिए, phototrophism. Huh? If the plants give respond to the water, already I told you that hydrotrophism. You should note down these following terms, and क्या इस phototrophism का मतलब क्या होता है? It is a growth moment. Yeah, we can simply say that it is a type of moment which the plant respond to the light, to the presence of light. In the direction there is a light, there is a moment, there is a growth moment in the plant part. As the shoot, if we talk about the shoot part of the plant, that is the aerial part of the plant, respond to the light and it bends towards the light. And in spite of that, the roots, we saw the negative phototrophism, moves away from the light. Then in this way, the phototrophism, hydrotrophism second. Then is there here another, in case of the chemicals, if the plant respond to the chemical, that is simply known the term chemotrophism. Chemotrophism यहाँ केमिकल को रेस्पॉन्ड करता है। मैंने अभी बताया क्यों, सीधी सी बात, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं on the surface of the carpel, वो develop the pollen tubes. That pollen tubes moves towards the ovary where there are the ovules, and then the pollen tube में जो न्यूक्लियस होता है, मेल न्यूक्लियस, उसको पहुंचना होता है to the egg nucleus वहाँ, then thereafter there is a fertilization. It is an example of that is mentioned also in your textbook, that chemotrophism, due to the chemical presence, the plant part shows the movement, due to the presence of chemical. तो इस तरह का movement जो होती है वो chemotrophism कहलाते हैं. Then there is a, in case of touch we can say, then there is a thigmotrophism. Thigmotrophism. So thigmotrophism means in this the plant respond to the touch. If we talk about the climber plant, जो different बहुत सारे climber plant जो होते हैं, climber plants, हाँ, they need support. They need support. For the support, आपने देखा कि इन climber plants में क्या होता है? They have tendrils. They have the short tendrils, and their tendrils are winding. There is a winding in the tendrils. Then when they respond, when they that where they contact to the support, there is the whorl formation, and then these tendrils they accelerate their growth. इनकी growth वैसे accelerate होते हैं when they start to touch any support. तो आपने देखे बहुत सारे क्लैम्बर प्लांट्स में हम इस तरह का जो ट्रॉफिज्म मोमेंट, ट्रॉपिक मोमेंट है वो देखने को मिलता है. देन they are of the four types of the trophic moments, and how the trophic moments are different from the nesty moment is. Nesties जिनको हम कहते हैं, nesties भी होते हैं, वो non directional moments है. We can say that is a non-growth moment. There is moment plants give their response to the other situation, to the other circumstances, as a nesty is a nestic moment इसको कहा जाता है. Later on we study after this
तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉफिक मोमेंट्स एंड द नेस्टिक मोमेंट्स, उसमें क्या फ़र्क है। तो एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, जो ट्रॉफिक मोमेंट्स है वो ग्रोथ मोमेंट्स है एंड डायरेक्शनल मोमेंट्स है। ग्रो प्लांट के पार्ट्स में साथ साथ ग्रोथ होती है व्हेन इट रेस्पॉन्ड टू एनी conditions, then there is the moment and those moment is proof that is a growth moment. But in case of nestic moment, those are the non growth moments and non directional moments. कोई भी ग्रोथ नहीं होती है प्लांट बॉडी में या प्लांट पार्ट में, खाली जो होल ऑफ द प्लांट है वो रेस्पॉन्ड देता है टू दैट सिचुएशन, टू दैट स्टिमुलस। देन हियर वी कैन से इन दैट ट्रॉफिक मोमेंट two things take place. Here is a positive trophism, positive trophism, याद रखिए। ट्रॉपिक मोमेंट में या ट्रॉपिज्म में दो तरह के आपको दिखाई देगी, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, देन देयर इज सेकंड इज द नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में जो प्लांट है it moves towards the stimulus, it moves towards the any type of stimulus, ये उसके तरफ जाता है, that moves towards the stimulus, that respond, that has an attraction towards that, and that is the positive trophism। और वहाँ पे उसी दिशा में ग्रोथ भी होती है उसकी, at that direction also there is the growth take place। नेगेटिव ट्रॉफिज्म में क्या होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट पार्ट जो होता है, that moves away from any stimulus, वो स्टिमुलस से भाग जाता है। that ये जैसे लगता है it hates, ये नफरत करता है उससे, उस स्टिमुलस से, और it moves away from that type of stimulus, that is known as the negative trophism। positive trophism and negative trophism तो यहाँ अपोजिट होती है, they moves away all these stimuli, and positive trophism में जो plant part है, plant body, they moves towards these stimuli। I hope that you understand about the topic, that tropic moments in plants, and I introduce and I also mentioned all the types of ट्रॉफिज्म्स, ये हमें एक एक करके पढ़ना है विद एन एग्जांपल से, कि फोटोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म और थिगमोट्रॉफिज्म क्या होता है। और हमारा आज जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमने उठाया, दैट इज द ट्रॉपिक मोमेंट्स और ट्रॉफिज्म्स इन प्लांट बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।